Good morning, students. As we all know that we are studying about voice, and in our previous video we studied about present indefinite and present continuous. Students, now I would like to start this video by प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सारे रूल्स एक जैसे हैं, लेकिन हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेशन को देखना पड़ता है, क्योंकि रूल्स नहीं बदलते, सिर्फ टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है. उसके हिसाब से मैंने आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है जिसके माध्यम से आप लर्न कर पाओगे कि एक्टिव वॉइस में जो टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. जैसा कि आपके सामने है टेबल ए एंड टेबल बी. स्टूडेंट्स, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज इज एम आर. इन पैसिव वॉइस, in present continuous we use is oblique am oblique are plus being. In present perfect tense we use has been or have been, and we know that ki present perfect continuous we don't use passive voice. Now let us come to past indefinite. We use was oblique were. In past continuous we use was were plus being. In past perfect tense we use had been. Now let's come to future indefinite. We use will oblique shall plus be, and in future perfect tense we use will have been or shall have been. So students, हम अब ये इन सारे रूल्स को, इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्मेशन को सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे. हम अपने इस चैप्टर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके सामने है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव का. सो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव रिटन अ लेटर. इन पैसिव वी कैन चेंज इट, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी. नेगेटिव, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर. इन पैसिव वी कैन सी अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी. एंड इन इंटरोगेटिव वी कैन सी हैव वी हेल्प्ड यू. In interrogative, have you been helped by us? And here like we can say WH words, what have you done. In passive voice we can see what has been done by you. So now students, we shall go towards past indefinite tense. जैसा हम जानते हैं कि सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की पैसिव नहीं बनती और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती. सो हम यहाँ पर देखेंगे और क्या आवश्यकता है. इन पास्ट इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं. अफर्मेटिव, आई रोट अ लेटर. इन पैसिव, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी. नेगेटिव, आई डिड नॉट राइट अ लेटर. इन पैसिव, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी. Interrogative, let us see, did I write a letter? In passive we can see was a letter written by me. And WH words, why did you return my books? In passive, why were my books returned by you? Now students, we shall go towards past continuous tense. How can we change? Let us see examples in front of you. I was writing a letter. In passive, a letter was being written by me. In negative, I was not writing a letter. In passive, a letter was not being written by me. In interrogative sentences, if you see, starting with helping verbs, was I writing a letter? In passive, was a letter being written by me? In active, WH words, why were you doing that? In passive, why was that being done by you? Students, ये जैसा हमने देखा कि पहले की वीडियोस में हम रूल्स आपको पहले से बता चुके हैं, किस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है, किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और हमेशा हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रखा जाता है. अब स्टूडेंट्स, हम बढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर. अफर्मेटिव इसका है, आई हैड रिटन अ लेटर. In passive, if we change it, a letter had been written by me. Negative, I had not written a letter. In passive, a letter had not been written by me. Interrogative sentences, if we see, had I written a letter? In passive,
had a letter been written by me? In the WH words, why had you done that? And passive we can change it, why had that been done by you? Now students, we shall go to future indefinite. भविष्य काल के सेंटेंसेस की ओर गौर करेंगे कि ये किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। जैसा कि पहले ही मैं आपके सामने टेबल प्रेजेंट कर चुका हूं, सिर्फ चेंजेस हेल्पिंग वर्ब्स के होने हैं, बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन एक जैसा होता है। तो सिर्फ आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए उन हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्मेशन को याद करना है और आपके सामने जैसे जैसे एग्जांपल्स आते हैं उसके हेल्प से आप बड़ी आसानी के साथ पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। सो आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव, आई शैल राइट अ लेटर। इन पैसिव, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। इन नेगेटिव, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। इन पैसिव, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, लेट अस सी, shall I write a letter? In passive, will a letter be written by me? And WH words, when will Anamika pass the examination? In passive, when will the examination be passed by Anamika? And students, now finally, we can see about future perfect tense. Affirmative sentences. I shall have written a letter. A letter will have been written by me. In negative, I shall not have written a letter. In passive, a letter will not have been written by me. In interrogative, we will see, shall I have written a letter? In passive, will a letter have been written by me? And the WH words, why will Mohan have used my shirt? And if we turn into the passive voice, why will my shirt have been used by Mohan? स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली मैंने एक तरह के सेंटेंसेस को यूज किया हुआ है ताकि आप आसानी से इन सेंटेंसेस या इस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मेशन को आप समझ सकें और आपको इसे चेंज करने में आसानी हो। आशा करूंगा स्टूडेंट्स इस इजी एग्जांपल्स के साथ आप सारे इस फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। अब हम आपके सामने होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंसेस रखना चाहेंगे। तो सम सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क, लाइक सेंटेंस नंबर 1, दे आर, इट इज यू कैन से कि मिसलेनियस, मिश्रित होंगे आपके सामने। दे आर रिपेयरिंग द रोड, आई ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, the judge has sent them to jail, she wrote a letter beautifully, he was singing a sweet song, I had informed the police, they will have informed the administration of the accident, we will supply all the materials promptly, do you not play chess, does he sell onions, is she boiling eggs, nobody has helped me, did he break the window? Why were they not feeding the poor? Had the doctor not examined the patients? Where did you keep your bag? What were you doing then? How much water do you drink a day? Will they have left their books there? Where will Chiku have taught them? So students, आपके सामने कुछ मिश्रित वाक्य हैं जो डिफरेंट टेंसेस से लिए गए हैं। आपको इन्हें पैसिव में चेंज करना है। आई होप दैट यू कैन चेंज इट वेरी इजली। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक।